Of today's class, Python libraries and modules. In the last class, we have discussed about the functions and we have also seen the math module. In this chapter, we will see in details all these things. What is the Python libraries? What is module? How to create your own module, means user-defined modules. Okay, two things you have to understand. One, which is provided by the Python. The second, the same thing which we can create by ourselves. So for examples, the modules provided by the Pythons. Most of the modules are provided by the Python. But similarly, some modules we can create. कुछ modules हम अपने according भी create कर सकते हैं. जो modules हम खुद create करते हैं, उन्हें user defined modules कहा जाता है. अपनी need और requirement के according हम खुद भी module prepared कर सकते हैं. After preparing the module, we have to import. So how to import your created module in the Python program, that we will see, okay, in this lecture. So first of all, we should start from the Python libraries. So what is basically the libraries and how these libraries are related with the module? Okay, just I want to explain this diagrammatically. First of all, one second. Just a moment, please. See, this is basically a library. For example, I'm talking about the standard library of the Python. Suppose this is a library. In easy language, what is libraries? Libraries is a collection of different modules. So this is a library. Suppose I'm just writing one thing. If you have any problem, you can directly interact with me by chat. Okay. So Python standard library. Understand? One second. Suppose this is a library. So what library contain? The library basically contain the different modules. One second. Okay. So this is one module. Okay. 1 minute, please. There's a very important diagram. This is another module. And this is another module. Simple language, library is a collection of module. And what is the name of this module? Suppose this is a math module. All right. Now, just a moment, please. What about this? This is a random module. It is used to generate the random number. Okay. It's a very important module that we will discuss in detail. Suppose this is a third module. Okay. Statistics. For some mathematical statistics functions performance, we use this module. Random to math, sir, random to math के अंदर ही एक function आता है ना? नहीं. So Random. अलग से module क्यों? One second. Random is a module, not a function in the math module. Whenever you basically कभी अगर आपने random function को use किया हो, कभी भी first year में use किया सबने, this is very good question. कभी भी आपने अगर random module को use किया हो तो आप ऊपर लिखते हैं import random. लिखते हैं नहीं लिखते हैं? Yes sir. हाँ sir. Yes sir. Means you are importing the random module. और random module के अंदर एक function आता है जिसको हम लोग कहते हैं random.random और bracket, open bracket and closing bracket. तो इसका मतलब ये होता है कि that function will generate the random number between 0 to 1. That we will discuss in detail. So random module is not connected to the math module. The math is a different module, random is a different module. Okay.
ये कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो गया, दैट्स वेरी गुड. आफ्टर दैट, one second please, okay, just a moment. In your chapter number 4, it is clearly mentioned in the book Sumita Arora that random module is different, math module is different. 1 second please. One more module we can say that URL LIB. Just a moment please. I am just URL LIB. This is basically the module used to access the websites like google.com, facebook.com, Twitter, okay, Amazon. With the help of URL, we can access any website in our Python program. Okay, that's not in our scope of course. हमें जो mainly concentrate करना है वो इस module पे करना है, math module पर. And after that, the second most important module is the random module. Understand? So I'm just telling you, this is 60 to 70% theoretical chapter. So basically we are discussing the Python standard libraries means it's a collection of different modules. So math module is the one module which comes under the Python standard library. Second is the random module which comes under the Python standard libraries. Accordingly, statistics, URL, LIB, these are the several modules which comes under the Python libraries. Understand? First point is clear. Second point is that what modules contain. Again, important point. Suppose this is a math module. Okay. So generally, what module contains? Module contains the three things. The number one, functions. The number two, classes can also be the part of module, and some variables. Generally, हम ज़्यादातर functions को ही use करते हैं. So if we talk about the functions which comes under the module, 1 second. I just want to create one more area, then you will be better understand. So this is basically, okay. So math module, अब math module के अंदर, inside the math module क्या क्या होगा? So इसके अंदर POW, it is a function. GCD is a function. Factorial is a function. SQRT is a function. So according to the diagram, it is very much clear. Libraries contain the modules and the modules contain the functions. Suppose we want to use any particular function. Suppose I want to use the POW function or GCD function or factorial function, whatever. So we must have the idea कि ये function किस module में आता है. तो बेसिकली POW फंक्शन आता है आपके मैथ मॉड्यूल के अंदर. सो विदाउट इंपोर्टिंग द मैथ मॉड्यूल यू कैन नॉट एक्सेस दीज फंक्शंस. अंडरस्टैंड? सो इफ यू टॉक अबाउट द रैंडम मॉड्यूल, इट्स अगेन नेक्स्ट लेवल डिस्कशन. आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व दिस रैंडम मॉड्यूल ओवर हियर. सर, 1 minute. Random is basically a function also. Random is a module also, random is a function. Suppose you want to use the random function, then you have to import the random module. Okay, now please ask the question. Sir, GCD function is used for? Greater common divisor. Suppose if we talk about 2, 4. So what are the common factors? Suppose 2, 4. So what are the common factors in 2 or 4? 1 and 2 are the factors of 2. And 1 to 4 is the factors of 4. Yes, sir. अगर हम 2 के factors की बात करें तो 1 और 2. अगर हम 4 के factors की बात करें तो 1, 2 and 4. Now what are the common between the 2 and 4? 1 is a common. 1 and 2. And 2 is also common. But 2 is the greatest common. Yes, sir. So according to the GCD, it will print the greatest common, that is 2. Understand? SQRT you have already used. 144 SQRT is 12. Yes, sir. Okay. So this diagram is clear to everyone. Please respond. Yes, sir. Okay. Yes, now sir. I have created some theory actually. Okay. I have created some theory. So you will better understand. Just a moment. This is the basically theory I have created. Okay. So what is the library? A library refers to the collection of modules that together supply to specific type of need or application. एप्लीकेशन की नीड को ध्यान में रखते हुए, एप्लीकेशन मतलब हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन भी कहते हैं, उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए पाइथन ने
कई मॉड्यूल्स क्रिएट करे हैं. Suppose in any program we want to perform some mathematical operations, some statistical operation, some random number generation. So these are the modules are created. A library can have the multiple modules. Okay, we have already seen this point. In it we can import these modules in our program. हम इन modules को अपने program में import करके use कर सकते हैं. Understand? And use. So our program will simple. हमारा program बहुत simple हो जाएगा. क्यों simple हो जाएगा? हमको हर function के लिए coding नहीं करनी पड़ेगी. जैसे अगर मान लो हमको SQRT generate करना है, तो we don't need to write the SQRT program in our program. It's already there. Only we can use. The ready-made functions are there and we can use. And we can import this module in our program. Okay, this is simple. The size of the program will be reduced. Yes, अगर हम बने बनाए already created functions को या modules को अपने program में use करते हैं, तो हमारे program का actual size reduce होगा और हमारे program की performance increase होगी. So Python library is a collection of functions and methods that allows you to perform the many action without writing your code, without writing huge code. You can say that. Understand? Now, some commonly used Python libraries. सबसे जो important Python की library है, उसे हम लोग कहते हैं Python standard libraries. अच्छा, one thing I want to discuss. Some Python libraries are provided by Python. These are the pre-installed libraries. We don't need to install. अभी तक हमने किसी लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं किया. शायद फर्स्ट ईयर में आपने किया हो, बट आई एम श्योर कि नहीं किया होगा. कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जो कि पहले से पाइथन में इंस्टॉल नहीं होती. जब हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं ऑफिशियल साइट से python.org से और उसके बाद इसे हम इंस्टॉल करते हैं, तो आफ्टर इंस्टॉलेशन सम लाइब्रेरीज कम्स एज अ पार्ट ऑफ पाइथन. उसे हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज वी डोंट नीड टू इंस्टॉल. इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन आवर पाइथन सॉफ्टवेयर. बट apart from that, some more libraries are there which we have to install with the help of PIP. Anybody know about the PIP? PIP का आइडिया है किसी को? Python Installation Package. कभी सुना हो इस नाम को? Do you have any idea? Sir, सुना है, sir. Okay, so with the help of PIP, we can install these libraries in Python. Okay, that we will discuss later. Yes, how to install these libraries. Okay, in this chapter. So like we are using VS Code reader. So PIP install PYT SX3. तो सर उससे वो अपने आप इंस्टॉल करना शुरू कर देगा उस सॉफ्टवेयर को. Yes, yes. But you must have the knowledge how to install by the PIP. Okay, PIP is the basically module by which you can install any other library. Okay. So in this Yes, sir. Python standard libraries, my first module is the math module, which provides the mathematical functions we have seen. Okay. C math module is also there, which provides the mathematical functions for the complex numbers. अगर हमें कुछ complex number से related कुछ functions perform करना है, then we can use the C math module. Accordingly, random module which provides the random number in a specific range. Random numbers are those numbers which we cannot predict. हमें जिसका prediction ना हो, मालूम हो, ये अपने आप से जनरेट होते हैं. हमने एक रेंज स्पेसिफाइड कर दी 1,100. अब उस 1,100 के बीच में रैंडम नंबर जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा. Statistics module which provide the mathematical statics functions. Okay, URL LIB. Just I'm taking the little idea of these modules. Okay, URL LIB module which provides the URL uniform resource locator www.google.com. This is basically a URL. Okay, handling functions so that you can access the websites from your program. अपने program से आप websites को भी approach और access कर सकते हैं. Okay, बहुत rarely हम अपने Python के कोर्स में इसको यूज करेंगे. अब आता है NumPy.
numpy भी एक लाइब्रेरी है, लेकिन ये लाइब्रेरी आपकी पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की तरह नहीं है, मतलब ये प्री इंस्टॉल नहीं होती। आपको अगर इस लाइब्रेरी को यूज करना है, देन यू हैव टू मैनुअली इंस्टॉल। How to install? You have to use the PIP command, PIP, Python installation package. With the help of Python installation package, you can install the NumPy. Okay. This library provides some advanced math functionalities along with some tools are provided to create or access the numeric array. अगर हमें बेटर मैट्रिक्स के क्वेश्चंस या न्यूमेरिक एरे के क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए हमें NumPy लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। Okay. After that, SCIPY, SciPy library, which provides the algorithm and mathematical tools for scientific calculation. Some scientific calculation related suppose we want to perform, then there is a library, SciPy, it is available. Okay. हमें इनका आइडिया होना बहुत जरूरी है। यूज तो हम इनका नहीं करेंगे अपने कोर्स के स्कोप के अकॉर्डिंग, लेकिन बट वी मस्ट हैव द आइडिया। TKINTER, अगर हमें टिंकिंटर्स, अब ये किस लिए यूज की जाती है? क्योंकि थ्योरेटिकल हमको समझना बहुत जरूरी है। जस्ट अ मोमेंट, हम यूजर से कुछ इनपुट ले रहे हैं। सपोज अभी तो हम लेते हैं system.out.print, सॉरी हम लेते हैं INT इनपुट इंटर नंबर, ठीक है। हम बेसिकली एक फॉर्म के थ्रू भी यूजर से इनपुट ले सकते हैं। हाउ? जस्ट अ मोमेंट प्लीज, वन सेकेंड। ओके, सपोज आई वांट टू क्रिएट अ फॉर्म, वन सेकेंड, एंड इन दिस फॉर्म देयर आर सम इनपुट बॉक्सेस। अक्सर आपने अगर गूगल पे साइन इन किया हो, साइन अप फॉर्म फिलअप किया हो, या फेसबुक पे भी साइन अप फॉर्म आता है, तो उसमें देयर आर सर्टेन इनपुट बॉक्सेस, रेडियो बटन्स आर देयर, चेक बॉक्सेस आर देयर, मेन्यूज आर देयर, ऑप्शंस आर देयर। वैसा अगर आप कोई फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, वन सेकेंड, यस सर, जस्ट अ मोमेंट, सपोज दिस इज द इनपुट बॉक्स, द यूजर हैज टू इनपुट द नेम, then after that this is the another box in which the user will input the email ID, then yes, password, then date of birth. Okay, so these types of form you want to create through the Python program. If you have any problem, please let me know. Just a moment. no sir, One minute. Okay, input name, enter email ID, ये इनपुट बॉक्सेस हैं। इसमें यूजर अपना नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड्स वगैरह टाइप करेगा। पासवर्ड टू एक्सेस द फेसबुक, डेट ऑफ बर्थ। ओके, इस तरह की फैसिलिटी अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग हमने पाइथन की है उसमें अवेलेबल नहीं है। बट विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूल, the module which we are discussing, that is called TKNITER, TKNITER. This module is basically used to provide the graphical user interface. Graphical user interface क्या होता है? Which provide the user interface toolkit that helps to create the user-friendly GUI for the different type of application. GUI का मतलब होता है graphical user interface. ये इंटरफेस है जिससे यूजर हमारी वेबसाइट पे इंटरैक्ट करेगा। हम यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन अगर फिलअप करवाना चाहते हैं तो हम यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे जिसमें यूजर अपना नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ विल एंटर। तो ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, ये जो फॉर्म क्रिएट हो रहा है, बेसिकली ये वो मॉड्यूल क्रिएट करेगा। उसमें हमें कुछ प्रोग्रामिंग करनी होगी, बट फॉर दैट प्रोग्रामिंग वी हैव टू इंपोर्ट दैट TKNITER module. Okay, now these things are clear to everyone. Matplotlib is a very important library in our Python. Suppose we want to develop some graphs. Okay, like you must be aware that about the graphs and charts. आपने पढ़ा होगा मैथ में लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट,
जिसमें हम अप्स एंड डाउन्स वेरिएशन दिखाते हैं कि इस टाइम पर हमारी पॉपुलेशन क्या है, लास्ट ईयर क्या थी, उससे पहले क्या थी। सपोज अगर हम कोरोना वायरस का डेटा शो करना चाहते हैं तो कैसे कैसे मंथ बाय मंथ कोरोना वायरस के केसेस इंक्रीज कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू शो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस सारे डेटा को। तो पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट, लाइन चार्ट के थ्रू अगर हमें कुछ चार्ट वाइज अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, मैटप्लॉटलिब। अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी। इस पर पूरा एक चैप्टर बेस है जिसका नाम है डेटा विजुअलाइजेशन, जो कि आपका थोड़ा आगे आएगा। तो इसमें हम इस लाइब्रेरीज के थ्रू हम प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम का हेल्प लेकर के प्लॉट्स करते हैं, सच एज प्लॉट्स, charts and graphs. Need to install the PIP, but this library is also not pre-installed. इसे हमें PIP के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा। After installing, we can use or we can access all the important modules or functions which is coming inside matplotlib. Okay, up to this, everything is clear. Then we will go to the next level. Please respond, everyone. Yes, sir. Okay, please respond, everyone. Yes, sir. Do you have any problem? Just a moment. Let me check the participant first of all. Kumal? Yes, sir. Why you joined late? That I will discuss later. Yeah. Okay, sir. Janvi, are you there? Janvi, are you there? No, sir. Anshika, up to this? Yes, sir. Everything is clear? Yes, sir. Great. So this is a very important chapter, theoretical. इससे आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे. One second. Now, what is a module and how to import the module? Okay, you have the idea about it, but let's take a little theoretical section. A module allows you to logically organize your program code. Okay, grouping related codes into a module makes the code easier to understand, and use a module is a file consisting of a Python code. Module कुछ नहीं है, एक Python की फाइल है, ओके और उस सपोज हमने एक मैथ मॉड्यूल बनाया, तो मैथ मॉड्यूल क्या है, एक पाइथन की फाइल है, जस्ट अ सिंपल पाइथन फाइल। अब उसके अंदर जब हम मैथ मॉड्यूल के अंदर आएंगे तो इनसाइड द मैथ मॉड्यूल सर्टेन फंक्शंस वी हैव टू डिफाइन, और वो सारे फंक्शंस आपस में रिलेटेड होने चाहिए। व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिलेशन? रिलेशन का मतलब ये है कि अगर हमने मैथ मॉड्यूल बनाया है, सपोज अगेन आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, सपोज अगर हमने मैथ मॉड्यूल बनाया है, अब अगर इसके अंदर हम रैंडम फंक्शंस ले लेंगे तो दिस इज कॉल्ड अ मिसमैनेजमेंट। तो एक जैसी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने वाले फंक्शन हम एक मॉड्यूल में प्लेस करते हैं, ताकि यूजर जब भी इन मॉड्यूल को एक्सेस करे तो उनको सिमिलर फंक्शनैलिटीज एक साथ मिल जाए। ओके, सो जिन फंक्शन में सिमिलैरिटीज होती हैं उनको एक मॉड्यूल में, और दूसरे फंक्शंस की सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग उसको हम दूसरे मॉड्यूल में प्लेस कराते हैं। ओके, नाउ जस्ट अ मोमेंट। ओके, 1 minute. Okay, you must be know that without importing the module you cannot access any function. Okay, this point is agree? ये इस पॉइंट से सब लोग एग्री करते हैं? Yes, sir. Okay, without import, how to Yes, import? अब सपोज हम पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वी हैव टू राइट डाउन import math. ओके, तो मैथ मॉड्यूल विल बी इंपोर्ट। मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हुआ है, बट सपोज यू वांट टू एक्सेस एनी पर्टिकुलर फंक्शन of that math module, so you have to specify math word along with the function. What I'm trying to say, just a moment. Okay, 1 minute please, because this point should be clear. Okay, 1 minute. See, this question is asked, import math. We have imported the math successfully. The math module is imported. But suppose we want to calculate the SQRT. So print
we have to first mention math, then SQRT. ओके, मैथ स्पेसिफाई करना यहां पर जरूरी है, क्योंकि मैथ के अंदर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। तो आप मैथ के कौन से फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैथ मॉड्यूल के साथ ही आपको उस फंक्शन को एक्सेस करना होगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, फ्रॉम मैथ import POW? What is the meaning of this line? It's a very important line. We are not importing the math module. Please understand. This thing should be clear to everyone. We are not importing the math module. We are just importing the POW function which comes under math. All right? हम सिर्फ POW फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं जो मैथ मॉड्यूल के अंडर में आता है। सो अब अगर हमें POW को यूज करना है तो हमें मैथ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम मैथ लिखते हैं तो इट विल शो द एरर। 1 second, I will show math.pow and 2,4. All right, definitely it will show the error because we have not, okay, it will not show the error because this is basically we have done already. So just a moment, I just want to check 16 is there. Why? 1 second, it will definitely show the error. 1 minute, because we have import the math module also. 1 minute. So this is the fresh shell. Okay, import from math, import POW. Not fine. Now here we have only imported the POW functions of the math, but math module entire is not imported. Okay, suppose I am writing math.pow. Now it should give some error. See, name math is not defined. So what I am trying to say, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमने यहां पर सिर्फ POW फंक्शन को इंपोर्ट किया है जो मैथ मॉड्यूल के अंडर में आता है, बट मैथ मॉड्यूल इज स्टिल नॉट इंपोर्टेड। सपोज वी वांट टू यूज द POW फंक्शन, तो विदाउट मैथ यू कैन डायरेक्टली यूज POW. अंडरस्टैंड? इट विल शो द रिजल्ट. दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes, sir. Yes, sir. Yes, सर sir. मेरा एक क्वेश्चन था यस यस, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. सर। जैसे इसमें हम लोगों ने किया जैसे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट POW, सर अगर इसके अंदर हम लोग कुछ और यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम SQRT भी मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. SQRT सर ऐसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. बेसिकली Okay, दिस sir. लाइन Thank इज you. यूज्ड टू इंपोर्ट स्पेसिफिकली एनी फंक्शन. किसी एक फंक्शन को आपको यूज करना है. यू डोंट वांट टू यूज द मल्टीपल फंक्शंस ऑफ द मैथ मॉड्यूल. आप सारे फंक्शन यूज नहीं करना चाहते, आप किसी एक फंक्शन को यूज करना चाहते. सपोज मैंने कहा कि इंटायर, आई वांट टू कॉल द इंटायर क्लास 10th ऑफ एनी कॉलेज, तो पूरा क्लास 10th हमारे पास आ जाएगा. लेकिन हमें पूरे क्लास 10 की रिक्वायरमेंट और नीड नहीं है. हम चाहते हैं कि क्लास 10 का कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट मेरे पास आए या क्लास 12 का कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट मेरे पास आए. आई डोंट वांट टू क्रिएट अ क्राउड. Okay, 1 minute. From math, import SQRT. All right. Doubt is clear? Understand. Now, what about the third section of importing? We have seen. First is import math. Import math means complete math module will be imported in our program. All right. From math import POW means only the POW function will import. Rest of all will not import. Point is clear? Okay. Now, from math import asterisk. What is the meaning of this line? We are just importing each and every function of the math module in our program. In our program, जितने भी फंक्शन मैथ मॉड्यूल में हैं, सारे फंक्शन हमारे इस शेल में इंपोर्ट हो जाएंगे.
Now freely we can use any function. Okay, for example, GCD 2,4. All right, 2 is there. 1 second. और the most important second point is most important is that आपको मैथ साथ साथ यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे फंक्शंस आपने मैथ के ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखे हैं. ओके, नाउ 5, the factorial of the 5 is 120. Understand? Please respond. Okay, 1 minute. Yes, sir. 2 Yes, comma sir. 3. Fine. 32.0. So freely you can use any functions after writing this line from math import asterisk. Means we are importing each and every functions which comes under the math module. Okay, fine. इन्हीं points को हमने थोड़ा theoretical लिख दिया है और ये आपको notes दे दिए जाएंगे. One, import module as alias. alias का मतलब होता है कि जैसे किसी का नाम बहुत बड़ा है, राम कुमार सिंह, तो हमने उसका एक एलियास सेट कर दिया आर ए. तो जब भी हम आर ए कहेंगे दैट मीन्स आई एम कॉलिंग राम कुमार सिंह. ओके, सो हियर आई एम यूजिंग इंपोर्ट मैथ एज एम. तो अब कभी भी अगर हमको मैथ यूज करना है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द मैथ वी कैन सिंपली राइट एम. तो एम का मतलब है कि पूरा मैथ एम से रिप्रेजेंट हो रहा है. ओके, 1 सेकेंड. इस चीज को हम पहले भी बता चुके हैं, बट import math as m. Understand? Now suppose we want to calculate the factorial, so I just no need to write the math, just simply m dot understand 720. Are you getting? This is the another way to use the module in your program. This point is clear to everyone? इस m की जगह पर, सर एक बार फिर समझा दीजिए, समझ नहीं m की जगह पर आप कोई और एलियास भी सेट कर सकते हैं. Ask के, हमने यहां पर मैथ का एलियास क्या सेट कर रखा है? के. अब अगर हमको लिखना है, मान लीजिए हम लिखते थे math.pow फॉर पावर कैलकुलेशन, लिखते थे कि नहीं लिखते थे? math.pow 2,3 ऐसे लिखते थे. नॉट विल शो द एरर. क्यों एरर शो कर रहा है? क्योंकि आपने मैथ का एलियास के सेट कर रखा है. तो आपको मैथ की जगह पर अब क्या लिखना होगा? k.pow लिखना पड़ेगा. वेरी गुड, एक्सेलेंट. जस्ट अ मोमेंट. ऑलराइट, क्लियर? ये क्वेश्चन बेसिकली आपके आउटपुट्स में पूछे जा सकते हैं, तो you must have the idea of these scenarios. Okay, done. Now slowly I am coming from the math import we have seen. Now the most important part, the second most important part is that how to create the module. I want to ask before entering into this section, I just want to ask one thing. Please clear. What is math? What is math? So my dear student, after that, I just want to discuss how to create the module. Okay, so module is basically the collection of functions, classes, and some variables. Okay, we have seen some inbuilt modules in the Pythons. Like random module is an inbuilt module. Math module is an inbuilt module. The module which is created by the Python developers or the Python programming languages, these are the inbuilt modules. They are already created, only we have to use. But the question is that suppose we want to create our own module. 1 second. So how to create the module in the Python? Apart from the built-in module, programmer can create own module as per the need and the requirement of the program. Module is nothing but the collection of functions, so we can create the several functions under the module. Okay, after creating the modules, we can create several functions according to the need of application. We can place these functions inside the module, and it will behave just like same
as the created modules are behaving by the Python. And when we import that module in any program, so all the functions which is defined under that module will be visible in the program and we can simply use. What about the benefits? If you talk about the benefits, reusability of the code, this is the one major benefit of the creating the module. Okay, the same code we can reuse several times. एक ही कोड को हम बार बार यूज कर सकते हैं. No need to write the huge code in every programs if the model is created and the functions are there. So no need to write the same things and same codes in every program again and again. Complexity will be reduced. Suppose any program is very lengthy, obviously then complexity issues will be very good. If the program size is less, then the complexity will be reduced. Performance optimization. If any programs is containing the less code, then definitely the speed and performance and the execution of that application will definitely increase. So the program will run in a very fast manner. Okay, so all right. Okay, so I just want to ask a question. What is math? Please answer my question. What is math? In respect to Python programming language, what is math? It's a module. It's a module, correct? It's a Python provided module. This line is correct? Yes, So it can define functions. It contain. This is a module. It contains some Yes, sir. functions. Who is created sir. this module? Who is So created it is this an module? inbuilt module. Who is created this module? The Python developer Python. created this module, correct? Means, in other words, we can say that it's not a user defined module. मतलब हमने आपने इसे create नहीं करा है. The Python developer is created this module and it basically comes as a part of Python programming language in the standard library, Yes, sir. correct? Okay, understand? So this module is created by the Python. We have not created this module. Understand? What this module contain? This module contains the several functions like POW, like factorial, like GCD. All these functions comes under body of math module, correct? This point is clear? Because I want to relate these things in the next, just next level. So this is a module which is created by the Python, and in this module there are a lot of functions are there. Okay, done. So similarly, just a math module is created. I want to create my own module. Please understand. I want Yes, to sir. create my own module. हम ऐसा ही अपना मॉड्यूल क्रिएट करना चाहते हैं और उसके अंदर इन दैट मॉड्यूल, जैसे सपोज आई वांट टू क्रिएट माय ओन मॉड्यूल, माय मॉड्यूल ओके, I want to create my module. This is a very important topic which we are discussing. Understand my module. And in this my module, I want to generate my own functions. Please, this point is clear to everyone? What Yes, sir. Yes, I sir. want to create my own Yes, sir. module, and in that module I want to place some my own function. हम एक अपना मॉड्यूल क्रिएट करना चाहते हैं और उसमें हम अपने फंक्शंस प्लेस करना चाहते हैं. जस्ट सेम एज द मैथ मॉड्यूल इज क्रिएटेड बाय पाइथन. ओके, तो इस मॉड्यूल के ओनर और क्रिएटर हम होंगे. इस मॉड्यूल के क्रिएटर पाइथन है, but the module I am going to create, that is my module. Understand? So this is basically the Yes, topic sir. which I am going to discuss. So ready for that? It's a very important practical, completely practical approach. So I just want to clear this drawing and please
Okay, just a moment. So in this D drive, we have already created a folder Python programs. All right. So here in the Python programs, I want to create a folder user defined modules. This is visible to everyone. Just a moment. Just a moment. Okay. So user defined modules. I have created a folder in my directory Python, in my directory Python programs. Okay, fine. Oh, 1 second. Python programs. Okay. Just a moment. I just want to recheck we have created in the right location or not. Yes, sir. Just a moment, please. This is D drive. And in the D drive, Python programs, where is the Python program? This is the Python programs, all right? Inside the Python programs, I have created one folder that is the user defined module, all right? Okay, now inside the user defined module, I want to create my own module. Okay, so what is module? Module is nothing but just a Python file. Okay, so I'm going to create my first module, new, text document, 1 minute. And the name of my module is my module. All right. And the extension will be py. Just I have to click in the simple OK. Now, understand? Now, no need to magnification. So I'm just closing. Please understand. Don't worry about the timings. Okay. Just I'm double clicking. It's the Django folder I just want to close. Okay, fine. 1 minute, please. My module. All right. So this is my Python file. The name of the file is mymodule.py. All right. Now, please answer my second question. What module generally contain? Please reply. So What functions. generally contain? Functions. Good. Very good. The module generally contain the function. Similarly, we have seen the math module was containing some mathematical functions. So this is my module. तो इसमें हमें अपनी need और requirement के according कुछ functions create करने हैं. Okay. So I want to create my function def simple interest. Okay. This is my first function, and in which I have defined p comma t comma r, simple function. It is calculating the simple interest. Okay. And here SI is equal to P into T into R. Very important discussion is going on. Please understand. And return SI. This topic is related to the user defined functions. If you are a little bit getting confused, so I have uploaded a separate lecture, user defined functions, how the functions return the value, and how we can pass the list. 3 videos are uploaded in my channel. You can go through. Okay. So one function I have created. My second question is that how many functions a module can contain? Please respond. एक मॉड्यूल कितने फंक्शन कंटेन कर सकता है? जितने चाहे उतने कर सकता है. As such, yeah, very good. As such, no limit is defined. जितने चाहें आप उतने फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं. No problem. So def add. हमने एक फंक्शन बनाया जो 2 नंबर को ऐड करेगा. ओके. और जस्ट सम इज इक्वल टू a प्लस b. मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि हमारा पर्पस है आपको मॉड्यूल से अवेयर कराना. आप उससे एक बार अवेयर हो गए तो एनी लेवल ऑफ फंक्शन यू कैन डिफाइन ओवर हियर. सो हाउ मेनी फंक्शंस वी हैव डिफाइंड? How many functions we have defined? 2. Where these functions I have defined? In
in my module. Okay, def product A comma B comma C. This is my third functions I am going to define. P is equal to A multiply B multiply C. 1 minute. Return P. Rakshit, are you there? Okay. Understanding? Okay. Yes, sir. Don't want to execute this function, just I have created this function. I am just saving this file. हमने फाइल को सेव कर लिया. And I want to close this file. My module is prepared. My module is prepared. After preparing the module, how to use this module? Anybody having idea? Module बनने के बाद इसे हम यूज कैसे करते हैं? सर हम लोग अपने नॉर्मल प्रोग्राम में इंपोर्ट कर देंगे माय मॉड्यूल, उसके बाद इस्तेमाल कर लेंगे. Good, very good. By the import method or by the import command, we can import. So now I have created my module. The name of my module is my module. नाम आपको ध्यान रखना है दो चीजों का. एक तो आपको अपने मॉड्यूल का नाम ध्यान रखना है और दूसरी बात आपको उन सारे फंक्शन का नाम ध्यान रखना है जो आपने अंदर बनाए हैं. With the case sensitive function. So simple interest is the one function, add is the another function, and product is the another function. Here add is the capital. I am just making it small ताकि सब एक ही फॉर्म में आ जाए. Okay. Again I am saving. After modification you have to save. Now I am just closing this. Now, secondly I am going to create a file. Okay. Suppose demo and py. This is my simple file. इस फाइल के अंदर, डेमो फाइल के अंदर I want to use my module. हम इस मॉड्यूल को यूज करेंगे. Okay, no problem. So please 1 second. Okay. This is my Python file in which I will use that module named my. All right. We can take the input by user, no problem, or we can directly pass the value. My purpose is to test the module. All right. So just I am taking principal 200, rate is equal to 4%, time is equal to 8 years. Okay. Now I want to access. Now I want to access this function simple interest. Okay, so I'm writing and simple interest. 1 second, please. Hello. हाँ सात्विक क्लास चल रही है. Okay, anybody want to ask any question? No, sir. No, sir. That simple interest is returning the value, means it is a returnable function. Okay, so RESULT result, yeah, SI is equal to simple interest P comma R comma T and print interest comma SI. Is it everything is right? सब कुछ ठीक है? No sir. Lot of mistakes are there. No. Lot of mistakes are there. Okay. Yes, sir. Intentionally मैंने ऐसा लिखा है. तो how to correct? सबसे पहली बात, the very first important thing is that simple interest is defined. It is a function. Look at over here. It is defined. Again, that's why I'm using C. This is defined in the math module.py. It is showing. That's why I'm using the sublime. My module के अंदर आपने इसको define किया है. तो how to write? Import my module. Now everything is right. अब ठीक है? Yes, sir. अब ठीक है? आप सिर्फ इंपोर्ट मैथ करके आप यूज कर लेते हैं. आपको यहां पर पे भी तो लिखना पड़ेगा माई. Yes, sir.
module dot My simple module interest. dot. Now we are in position to run this program. I'm just saving. So 200 multiplied by 4 multiplied by 8 divided by 100. नहीं देता है बराबर से. So 64 answer should come on screen. Am I right? Yes, sir. Just a moment. I'm just saving. Now Yes, I sir. want to execute. For execution point of view, what we have to do? Please answer my question. First of all, command prompt, and we have to go to the D drive because that directories which we have created is located in the D drive. CD Python programs. 1 minute. This is Python programs. In the Python program, one more directory is there, user define modules. User define module. 1 second. Modules. User define module. This is the directory actually. इस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं. तो इस डायरेक्टरी में जाने के लिए what you have to do? 1 minute please. CD user define modules. All right. Now I'm just clearing the screen and drawing. Okay. Now inside the user define module, I'm just checking. So which program we want to execute? Demo or my module? Demo. Demo. Okay. So py demo.py. Are you getting the answer? Are you getting the answer? Behind this program, most important things are running in the background. आपका मॉड्यूल इसमें रन कर रहा है, उस मॉड्यूल के नहीं समझ में आया थोड़ा. Okay, answer is coming or not? सर आ तो रहा है. Okay, 64 we have decided ना? Okay, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये चीज समझ में आ गई है? Please respond me. I will explain again. Don't worry. But please respond. मुझे आ गया समझ. Okay, very good. Just सर आ गया. okay, 1 minute, please. Okay. What is my module? Please answer. What is my module? सर ये हमारा फंक्शन है. ये हमारा मॉड्यूल है जो हमने बनाया Yes, था. sir. ये बनाया था ना माई मॉड्यूल. देखो Yes, sir. इस माई मॉड्यूल के अंदर क्या क्या है? सर In आप my हमारे module there फंक्शन are है 3 जो functions I have created. 3 functions हमने create किए हैं. How many functions Yes, are there? sir. Number 1 simple interest, number 2 add, number 3 product. All right. अब इन functions को हमें अपने प्रोग्राम में यूज करना है. ओके इन functions को हमें अपने प्रोग्राम में यूज करना है. तो ये फंक्शन किस मॉड्यूल में आ रहे हैं? सर माई मॉड्यूल में आ रहे हैं ना? माई माय मॉड्यूल. मॉड्यूल के अंदर आ रहे हैं. बिना माई मॉड्यूल को इंपोर्ट किए हम इन फंक्शन को यूज कर लेंगे. नो सर. Can we use this function without importing the my module? No, नो sir. सर. practically not possible. Okay. So my first line is that I am importing my module. Clear? तो जैसे ही हमने my module को import किया, अब हम my module के किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं. Please Ritwik, sir. respond. So how many functions are Yes, there in sir. my module? Just a moment. 3 functions. सर सर 3. 3. Very good. ठीक है. This is my module. And in the my module, my number 1 function is simple interest. Sir. Correct? Yes, sir. Yes, What about my second function is सर एडिशन. add. Addition. इसको add समझ लो भैया. यस Number सर. 3 is Sum multiplication. Product. Please. Naming convention is very important. ओके सर. Product. Understand? Suppose I want to use simple interest function. So I have written here simple interest function. But before that we have to use the
module name. Okay, because this simple interest function is coming into the math module. All right. कभी भी आपको जब भी 1 minute, just a moment please, 1 minute please, I want to clear one thing, just a moment please, then you will be easily understand. 1 second please. See, okay, just look at the IDLE screen. Yes, sir. Only for you. What I am doing? Yes, sir. What I am doing? Sir, importing math function. Okay, now I want to calculate the power. How to write? Sir, Yes. POW. No, Sir, POW. no. Mat dot. Yes, sir, math.POW. Okay, Math.POW. okay. So what we are doing? First of all, we are importing the module, Yes, sir. Yes, and sir. after that, we are calling the function along with the module name. Yes, sir. Okay, same thing I am doing over here. Just a moment. I am importing the module. Yes, sir. I am importing the module, and I am calling the function along with the name of. The module. Clear? Now this is Yes, clear. sir. Yes, sir. I want to call my second function, that is add. Okay, anyone can please tell me what we have? Yes, sir. I will. Please tell Sir, me. first we have to import our module. Already imported, na? Sir, already imported. Yes, sir. Result Okay, is sir. equal Sir, then to. we. Yes, sir. Result equals to, sir. Then we have to input our You values. just observe this, how important classes are going on. I just want to share one thing. I am taking the live sessions of International Pythons nowadays. And for you, I am personally available, but you are not responding in the group. So result is equal to my module dot. Ritvik, what we have to write now? Yes, sir. My module dot. I just want to access this function add. So what we have So to, my module.sim. I want to access the add function. Yes, sir. What we have to write now? क्या लिखना होगा हमको? Sir, add. Add. Is it okay? Yes, sir. And add किस टाइप का फंक्शन है, पैरामीटराइज के नॉन पैरामीटराइज? जस्ट अ मोमेंट. सी, add is a parameterize. How many parameter the add is accepting? Sir, 2. 2. 2. Then how many parameter we have to pass? 2. 2 parameters. Any 2 parameter? Is it okay? Yes, sir. Okay. Yes, And sir. that result will be stored in which variable? Result. Sir. That result will be Result. stored in this variable. Understand? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now simply I am writing result, comma. Yes, sir. All right. So what output should come in the screen? My first output will be 64.0, correct? My second Yes, output will be 3030. Within fraction of second, you will see the answer, because everything I'm taking the live. Okay, just a moment. So this is my, okay, this is my execution command. Correct? Correct? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now I want to call my third function. ठीक है, Ritvik, please tell. I want Yes, to sir. call my third function, product. How? How to write? Sir, D is equals to Okay, D is equals to my suppose I'm equals to taking my PR. PR is module the dot product. product. Product is equal to Product is My module dot My my module module dot dot product, comma PR something. comma. Sorry. And let me check which type of product function is there. It is accepting 3 parameter. Yes, sir. 3 parameters. Yes, sir. So how many Yes, parameters we sir. have to pass? 3. 3. Sir, 3. Understand? Now, Yes, sir. 1 second, please. Sir, yes, sir. Print product, comma PR. All right. 24 आंसर आना चाहिए. Yes, sir. 24 आंसर आना चाहिए. Clearing the screen. Yes, sir. All right.
Yes, sir. Now you are in position to develop world-class modules and function. The concept is not going to be changed, my dear students. The concept is not going to be changed. Okay, you can increase the function over here. Any number of functions you can put. Okay, the calling procedure will be simple. I don't want to use this my module every time. Now what we have to do? I don't want to include my module. Please tell me the smart answer. I will give you 10 marks. I want to remove this. Sir, please repeat. I want to remove this my module at the time of calling the function. I don't want to write my module. हम ये नहीं लिखना. Import my, so from my module import one second. Okay, from. So from my module import asterisk sign. So इससे सारे import हो जाएंगे. Is it right or wrong? Please tell me. Is it right or wrong? Is it right or wrong? Yes, sir. This line is absolutely correct. Absolutely. And just before 15 minutes back, we have already seen this line. अगर हम ये line लिख देते हैं, तो अब हमको my module सबके साथ attach करने की जरूरत नहीं है. नहीं पड़ेगी. Okay. I am just saving. Now, I am running this code. We will get the same answer. We'll get the same answer. This is all about the story of module creation. Okay? Clear to everyone? Okay. Understand? Please respond. This clear to everyone? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. now what you have to do for specialization and for better practice, you have to solve some questions. So in these online classes, what we have covered, basically we have covered the simple programs. We have seen the control statements, if, else, ladder if. We have also seen the while loop with the digit extraction. And after that, we have seen the for with for in. And the nested looping video already uploaded in the YouTube. Very good response. काफी अच्छा response आया उस पर. उसके बाद हमने 3 categories देखी functions की. Function किस तरह से values को return करता है. Data type is already completed. Membership operator is already done. Data types and operators already done. And we have already seen the math module. So major part basically we are covering. Okay. So अब आपको इन्हीं questions पर और ज़्यादा better practice करनी है. Okay. So I'm just closing the session. In the next class, we will discuss about the math module. I have prepared basically the notes. हमने notes prepared कर लिए हैं. Yes, Okay. sir. हम लोग discuss करेंगे in the next class. Just yeah. Sir, Please, सर देन तब तक सर थोड़े इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भेजिएगा सर ताकि क्वेश्चन देता हूं बट nobody is doing the questions ना. मैं क्वेश्चन को लिखता हूं और लिखने के बाद उन्हें पोस्ट करता हूं but nobody is responding the group and completing my task. Okay. सर लास्ट टाइम मैंने सारे कर लिए थे except the few students. ओके सर. Just a moment. Yes sir. So now we have Satvik, are you there? Okay. So I'm just closing the session and please do the practice. The recorded video will be uploaded. अगर आपने late join किया है तो आपको and please stay connected with me. Just a moment. Sir, please send some questions. Okay, sure, I will.